दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ आर डेली MCQ सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 41 to 60 20 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फेडरल फीचर है। सेकंड इज ऑल इंडिया सर्विसेज, ये यूनिटरी फीचर है। थर्ड सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यूनिटरी फीचर है। Number fourth is independent judiciary. Look, Indian Constitution talks about independent and integrated judiciary. Independent judiciary is a federal feature, whereas integrated judiciary represents unitary feature. Integrated judiciary means we have chains of court. At the top we have Supreme Courts, उसके नीचे आते हैं High Courts and then lower courts. एंड नंबर फिफ्थ इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक फेडरल फीचर है। सो नंबर 1 एंड नंबर 5 इज फेडरल फीचर, रेस्ट आर यूनिटरी फीचर 2, 3 एंड 6। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंक्लूड्स। 1858 के जो फीचर्स थे वो यहाँ पे बताने हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ कंपनी रूल by the crown rule, yes. Establishment of the board of control over the court of directors, board of control and court of directors था उनको abolish कर दिया गया था। so ये फीचर नहीं था। नंबर थर्ड इज reaffirmation of the system of open competition, yes. नंबर फोर्थ इज सेपरेटिंग द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। जो ये फीचर था फोर्थ, वो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1858 का नहीं था, तो ये भी गलत है। नंबर फिफ्थ इज क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। और इनको वो सभी फंक्शन दिए गए थे जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के होते थे। एक 15 मेंबर की काउंसिल एस्टेब्लिश करी गई थी जो इनको असिस्ट करते थे इनके काम के लिए। और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और वहाँ की जो एक कैबिनेट होती थी उसके एक मेंबर होते थे। सो राइट आंसर इज 1, 3 and 5. Right answer is D. Next question is no demand for a grant is to be made except on the recommendation of. So right answer for this question is President. Next is the word socialist and secular were added to the preamble by. तो ये अभी तक प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है एंड दैट इज सेकेंड अमेंडमेंट 1976, जिसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स आर they are enforceable in court of law, yes, this is correct. Second statement is these rights are absolute. No, fundamental rights are not absolute. They are subjected to some reasonable restrictions, और ये reasonable restrictions कितने सही है और कितने reasonable है ये decide कोर्ट करता है। नंबर थर्ड इज they can be suspended during national emergency except some. Yes, fundamental rights are suspended during national emergency except fundamental rights given under Article 20 and 21. Article 20 is protection in respect for conviction for offences. Article 21 is protection of life and personal liberty. Number 4 is they are available only to Indian citizens. No, they are not only available to Indian citizens. There are some rights which is applicable to all citizens as well as foreigners. Rights given under Article 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो इन आर्टिकल में राइट्स दिए हैं वो अवेलेबल है ओनली सिटीजन्स को, वेयर एज राइट्स गिवन अंडर रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स फ्रॉम 12 to 35 आर अवेलेबल टू ऑल. Number 5 is they are contained in part 4 of the constitution. No, they are in part 3 of the Indian constitution. So correct answer is C.
Next question is, which act provided for direct control of Indian affairs by the British government? This is easy one. Correct answer is A, Government of India Act 1858. Next question is, who characterizes Indian Union as a federation with a centralizing tendency? Right answer is Ivor Jennings. Next is, which is incorrectly matched? Prohibition of discrimination, Article 15, this is correct. Right to association, Article 19, correct. Right to protection of life, Article 20, which is incorrect. Right to protection of life under Article 21, and D is right to constitutional remedy under Article 32, which is also correct. So right answer is C. Next question is, the Governor General of Bengal become the Governor General of India. Why? So the right answer is D, Chartered Act of 1833. Next is, the correct statement about the directive principle of state policy are, they are borrowed from the Irish Constitution. Yes, this is correct. They are incorporated in Part 5 of the Indian Constitution. No, they are incorporated in Part 4 of the Indian Constitution. So second is incorrect. They seeks to provide social and economic base to democracy. Yes, this is correct. The state must compulsory implement them. Look, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इन्हें इम्प्लीमेंट करना है या स्टेट जो है वो इनको माइंड में रख के लॉज बनाए, बट जब कंडीशन स्टेबल हो और इनफ इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑल ऑफ देम आर गांधीयन इन नेचर. नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. यहाँ पे हम देखते हैं गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल प्रिंसिपल जो है वो अवेलेबल है. तो सारे गांधीयन इन नेचर नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज डी, विच इज 1 and 3 only. Next is, which of the following are correct about vice chairperson of Niti Aayog? First statement is, he is appointed by president. This is wrong. The vice chairperson of Niti Aayog is appointed by prime minister. Second is, he enjoys the status of cabinet rank minister. This is correct. Third is, he is a member of union cabinet. No, he is not a member, although he enjoys the status of cabinet rank minister. Number fourth is, he attends cabinet meeting as a special invitee. Yes, this is correct. Number fifth is, he is the de facto executive head of the Ayog. Yes, this is correct. यहाँ पे de facto executive head की बात की जा रही है. जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, दिस इज प्राइम मिनिस्टर. और जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं आयोग के, वो वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज 2, 4 and 5, which is C. Next question is, which of the following are not correct about CAG of India? He is appointed by the president for a period of 5 years. No, this is a wrong statement. Appointed by the president for 6 years and 65, whichever is earlier. His salary and condition of service is determined by the president. No, it's not president. The condition of service are determined by parliament. Number fourth is, he can be removed by the president on his own. No, this is a wrong statement. कैग को रिमूव करने का सिमिलर प्रोसीजर होता है जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है. इसके लिए एक दोनों हाउस में रिजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और मेजॉरिटी या तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होती है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. नेक्स्ट इज, he is responsible for maintaining the accounts of central and state. This is wrong statement. CAG is responsible for maintaining the accounts of states only. 1976 तक वो दोनों के अकाउंट जो है वो कंपाइल एंड मैनेज करते थे, सेंट्रल के स्टेट के. बट 1976 में उन्हें जो सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे रिलीव किया गया. अभी ये सिर्फ मेंटेन और कंपाइल करते हैं सिर्फ स्टेट्स के अकाउंट्स. राइट आंसर इज सी. जो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज, हु सेट द
Indian Constitution established a unitary state with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary feature. So right answer for this question is D. Casey Ware. Next is the Indian Federation is based on the pattern of. Right answer is D. Canada. Which one of the following amendments to the Constitution for the first time made it obligatory for the President to act on the advice of Council of Ministers? So right answer is 42nd Amendment Act 1976. Next question is which of the following is not a feature of Government of India Act 1935? हमें बताना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है। डायरकी एट द सेंटर, यस, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ऑल इंडिया फेडरेशन, यस, दिस इज ऑल्सो फीचर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यस। डायरकी इन द प्रोविंसेस, डायरकी इन द प्रोविंसेस को रिमूव कर दिया गया था 1935 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नंबर 57 is डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इट्स वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। सबसे पहले इनको स्टेट्स में एंड यू कैन से प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर किया गया था। 58th is statutory recognition to the portfolio system was accorded by. Next is the statutory recognition to portfolio system was accorded by. So right answer is C. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक और मेंबर को ऐड किया गया था जो थे फाइनेंस मेंबर। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी उसमें 5 मेंबर हो गए थे और इन मेंबर्स को जो है वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो है वो खुद गवर्नर जनरल के पास थे और यहाँ से जो पहली बार एक कैबिनेट जो सिस्टम गवर्नमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। Next question is the CAG of India can be removed from the office only in like manner and on like grounds as. Right answer is B. Last question, which of the following is correctly matched? 1909 Act, Principle of Election, 1990 Act, Provincial Autonomy, 1935 Act, Diarchy in State, 1947 Act, Responsible Government. So दिस इज इनकरेक्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था वो 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकिन स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में एंड 1947 एक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट ओनली। 1947 एक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सो राइट आंसर इज डी।